Let's do Brahmanad. Om. Om. Shanti. 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 Swastha. Dear student, previous class I discussed about the ionic character of covalent bond, dipole moment, application of dipole moment. Now I am going to discuss about the covalent character of ionic bond. Covalent character of ionic bond. Suppose take an example NaCl. In NaCl there is an electrovalent bond, sodium having 11 electron, but here Na plus ion is present. So the Na plus having such type of electronic configuration. Here 2 electron is present. Here 8 electron is present. On the other hand, here Cl minus ion is present. The electronic configuration of Cl minus ion is drawn like this. Here 2 electron present. Here 8 electron present. Here 8 electron are present. There is a electrostatic force of attraction that is called ionic bond or electrovalent bond. This is your Cl minus, this is your Na plus. मन रखिले जेतेबेले आमे Na plus और Cl minus को पाखा पाखी आनिबा सेतेबेले जाईकी ionic bond तैयारी होबो. On the other hand, there is also an extra bond will be formed in between Na plus and Cl minus ion. ये लगले KCl Lcl एटा KCl L M जेतबेले आमे पाखा पाखी दीटा आयन को बिले आणुचे सेतेबेले हमर आयनिक बॉन्ड तयारी होची. ता सहित बिले देखो बिले एठारे जो इलेक्ट्रॉन अछि से आर न्यूक्लियस द्वारा टाणी हबो. एठारे जो इलेक्ट्रॉन अछि ए जो इलेक्ट्रॉन आर न्यूक्लियस द्वारा टाणी हबो. जा फल रे कोन हबो ए इलेक्ट्रॉन गुडा को एडी जो इलेक्ट्रॉन अछि से ए पोजीशन रे रहया परिवर्ते टिके कोन हबो ना डाइवर्ट हबो माने एम्प्टी हबो. इलेक्ट्रॉन एडी रहया कथा किंतु एटी आसो कम बाय न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को टाणस. ऑन द अदर हैंड बिले ए जो Na प्लस रो इलेक्ट्रॉन एटी अछि किछि टाणी कि Cl माइनस आडे जीवो. बुझा पड़छ ना कोन कहछि. आमे जदि देखिया बिले Na प्लस रो अधिक न्यूक्लियर फोर्स थिबो बिले एज कंपेयर्ड टू Cl माइनस. जोटा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स कहूचे. कम बाय बिले एठारे 11 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन थिबो. एठारे कोन थिबो बिले 17 प्रोटॉन को 18 इलेक्ट्रॉन थिबो. यदि आमे गोटी इलेक्ट्रॉन पई न्यूक्लियर फोर्स बाहर करबा obviously एठारे अधिक न्यूक्लियर फोर्स पड़िबो एज कंपेयर्ड टू दिस. तेणु कोन हो बिले ए जो काटायन अछि Na प्लस अछि तार न्यूक्लियस आर इलेक्ट्रॉन को अधिक टाणिबो एज कंपेयर्ड टू आर न्यूक्लियस आर इलेक्ट्रॉन. कहबार मीनिंग हैला ई जो एनायन रो इलेक्ट्रॉन दा काटायन आडे बेसी टाणी हेकी जाइतो. जा फल रे तार ऑर्बिटल टा बेसी काटायन आड़ को पोलराइज
पोलराइज हेकी जाइथिबो माने घुंची करी जाइथिबो किंतु काटायन रो इलेक्ट्रॉन भी एनायन आडे कम घुंची की जाइथिबो ता सहित बिले ये मध्य नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव तनो there is a chance of repulsion. Finally we concluded that the cation attract the electron of anion more as compared to the anion attraction towards the electron of the cation. तेणु कौन होगा बिले anion रो orbital टी more polarizing ही cation रो orbital सहित overlap ହେଇଯିବ बिले एमती सिचुएशन है। फाइनली हमें कंक्लूडेड हे परिबा जे anion रो orbital cation आडे बेसी टाणी हेकी जाइतिबो cation रो orbital anion आडे कम टाणी हेकी जाइतिबो देखो बिले एमिति ओवरलैपिंग क्रिएट हेजिबो आमे जानि जे बिले ओवरलैपिंग कहबा अर्थ कोवैलेंट बॉन्ड को बुझेबो किंतु Na+ और Cl- मध्यरे केउ बॉन्ड थिला आयोनिक बॉन्ड थिला वर्तमान एठारे की बॉन्ड देखिला बिले कोवैलेंट बॉन्ड शो करेला तेणु बिले Na+ और Cl- मध्यरे जो आयोनिक बॉन्ड अछि से आयोनिक बॉन्ड की 100% आयोनिक कैरेक्टर शो करेबो नाही ताहिरे किछि कोवैलेंट कैरेक्टर रहिबो जेमिति बिले गोटे कोवैलेंट बॉन्ड रे आयोनिक कैरेक्टर रहउची सेमिति बिले गोटे आयोनिक बॉन्ड रे मध्य किछि कोवैलेंट कैरेक्टर रहिबो द आयोनिक बॉन्ड possess some covalent character due to polarizing of ion like this एठारे कोन होला बिले anion रो ऑर्बिटल टाणी होई की cation आडे बेसी गला cation कोन गला ना anion रो ऑर्बिटल को बेसी टाणीला on the other hand the electrons of the cation also attracted by the anion but this attraction is negligible as compared to the attraction between the electrons of the anion and nucleus of the cation एठारे बिले anion ऑर्बिटल cation आरे टाणी होई जाउथबा जगो आमे ताको कहबा पोलराइजेबिलिटी cation anion ऑर्बिटल को टाणुथबा जगो cation रो आमे पोलराइजिंग पावर बोली कहबा that means the ability of a cation to polarize an anion is called its polarizing power and the tendency of an anion to get polarized by a cation is called its polarizability. Next I want to explain about the Hudson's rule. According to the Hudson's rule, point 1, higher is the positive charge on the cation, higher will be its polarizing power and hence greater will be the magnitude of covalent character of an ionic bond. तार मीनिंग हला बिले जदि एटे बिले अधिक रु अधिक पॉजिटिव चार्ज हे जिवो तार कोन हो बिले अधिक रु अधिक इलेक्ट्रॉन कमी कमी जिवो प्रोटॉन तो सेम रहइबो जहा आगु थिला ताही रहइबो ता अर्थ कोन बुझछ इलेक्ट्रॉन प्रति जो न्यूक्लियर फोर्स अछि बड़ी बड़ी जीवा ना नहीं कम इलेक्ट्रॉन कमिला प्रोटॉन जेंति कांस्टेंट हे गेछि तेणु आम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जी आगु थिला पुणी बढ़ी आदि इलेक्ट्रॉन प्रति इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़िला ताले कोन हो बिले आर इलेक्ट्रॉन को बेसी से टाणिबो बेसी टाणिबा अर्थ तार ऑर्बिटल आसी बेसी ओवरलैप करिवो बेसी ओवरलैप करिया अर्थ बिले कोवैलेंट कैरेक्टर अधिक हला आयोनिक कैरेक्टर कमिला सपोज हमको वेरियस टाइप्स रो आयोनिक कंपाउंड दिया हबो आ पचारा हबो कहार
कोभालेंट कैरेक्टर अधिक सपोज कहवा NaCl MgCl2 नेक्स्ट इज योर AlCl3 NaCl रे Na रो +1 चार्ज MgCl2 रे आमे देख परिया Mg2+ AlCl3 रे आमे देख परिया Al3+ तो Al3+ रे बिले अधिक तमर पॉजिटिव चार्ज अच्छी the positive charge on cation in case of Al3+ is more यदि Al3+ रे अधिक चार्ज रहउची ताहाले पिले एठारे अधिक प्रोटॉन को कम इलेक्ट्रॉन रहउची तार एठारे अधिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहउची जा फଳରେ एठारे अधिक पोलराइज हुई एनायन ऑर्बिटल कैटायन ऊपर अधिक ओवरलैपिंग करूची ता अर्थ Al3 केस रे अधिक तमर कोभालेंट कैरेक्टर देखेबो ता अर्थ हम कोन लिख परिया NaCl having less covalent character than MgCl2 MgCl2 having less covalent character than AlCl3 मने रख बिले जहार आयोनिक कैरेक्टर अधिक थिबो से वाटर रे इजीली सॉल्युबल हे परिबो यदि गोटे कंपाउंड रो कोवेलेंट कैरेक्टर अधिक रहिला ताले से वाटर रे लेस सॉल्युबल हबो तमको आगरु कहैतिला लाइक डिजॉल्व लाइक फार्मूला पोलर सॉल्यूट ऑलवेज डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट non-polar solute always dissolve in non-polar solvent polar solute कहवा अर्थ जे आयन देई परथिबो non-polar solute कहवा अर्थ जे आयन देई परनथिबो एटारे NaCl रो more ionic character अछि as compared to covalent character so NaCl having more polar in nature as compared to other so NaCl is more soluble in water as compared to MgCl2 and AlCl3. Next rule is smaller is the size of cation, greater is its polarizing power and hence higher is the degree of covalent character in ionic bond. For example, हम देखिए अपने BCl2 MgCl2 next is your CaCl2 next is SaCl2 BaCl2 आमे जानि जे पीरियडिक टेबल रे टॉप टू बॉटम जदि जीवा एटॉमिक साइज बड़ी बड़ी जीवो तेनो बेरिलियम रो साइज लेसर देन मैग्नीशियम लेसर देन कैल्शियम लेसर देन स्ट्रोंशियम लेसर देन बेरियम साइज बिले जेते बड़ी बड़ी जीवो कैटायन रो न्यूक्लियस रो सेते इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बिले कमी कमी जीवो यदि कैटायन रो बिले इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स कमी कमी गला ताले से एनायन रो इलेक्ट्रॉन को बेसी टाणी परिबो नाही यदि से एनायन रो इलेक्ट्रॉन को बेसी टाणी परिबो नाही ताले एनायन रा बेसी पोलराइजिंग हे कैटायन ऑर्बिटल सेतिरे ओवरलैप करियो नाही जा फଳରେ हमर लेस कोवेलेंट बॉन्ड बोली कहबा हमें in case of BaCl2 the size of barium is more as compared to beryllium magnesium calcium strontium so in case of beryllium chloride the covalent character is less as compared to the other. This is due to the more atomic radii of barium. So the covalent character goes on decreases from beryllium chloride to barium chloride. Since beryllium chloride shows more covalent character as compared to other, so beryllium chloride is less soluble
in water as compared to other. Barium chloride is more soluble in water as compared to other. Next rule is a cation with pseudo noble gas configuration possess higher polarizing power than the cation having noble gas configuration, and hence it shows more covalent character to the ionic bond. What is the meaning of pseudo noble gas configuration? Already we know about the noble gas configuration. Then tell me what is the meaning of pseudo noble gas configuration? Noble gas configuration means it obey octet rule or dualite rule. Pseudo noble gas configuration means the valency shell must have 18 electron. Take an example: copper I chloride. Copper I chloride means cuprous chloride. And take another example, NaCl. In copper I chloride, the copper has pseudo noble gas configuration. In NaCl, the sodium having noble gas configuration. According to our rule, covalent character in cuprous chloride is greater than in NaCl. That's why cuprous chloride is less soluble in water as compared to sodium chloride. Next rule is greater is the negative charge on the anion, more it gets polarized by the cation, and hence more is the covalent character of the ionic bond. Suppose take an example, Na2S, another is your NaCl. Na2S having more covalent character as compared to NaCl, because here the anion is S2 minus, here the anion is Cl minus. In this case, the anion having higher charge as compared to this case. Next rule: larger the size of anion, more strongly it is polarized by the cation, and consequently the covalent character increases. Take example: CF2, CaCl2, CaBr2, CaI2. We know that the size goes on increases from top to bottom. That's why the size of iodine is more as compared to bromine, chlorine and fluorine. In this case, the size of anion I minus having more as compared to other anion, that is your Br minus, Cl minus, F minus. So in this case, the covalent character of CaI2 is more as compared to CaBr2 as compared to CaCl2 as compared to CaF2. That's why calcium iodide is less soluble in water as compared to other. Finally, पिले आमे गोटी conclusion देबा एठार न्यूक्लियस ए इलेक्ट्रॉन को जेते लूजली बाइंडिंग करी रखिबो सेते एनायन रो इलेक्ट्रॉन कैटायन रो न्यूक्लियस द्वारा टाणी हे कि जीव. नेक्स्ट पॉइंट कोन को आउची ए जो न्यूक्लियस जेते आर इलेक्ट्रॉन को टाणी परिबो सेते ए जो एनायन रो इलेक्ट्रॉन कैटायन आरे टाणी हे जीव सेते ओवरलैपिंग हबो सेते कोवैलेंट कैरेक्टर हबो. एनायन इलेक्ट्रॉन अधिक ओवरलैपिंग हबो कि न हबो कैटायन रो न्यूक्लियस डिसाइड करिवो. यदि कैटायन रो न्यूक्लियस बेसी टाणी दउतिबो ताले अधिक ओवरलैपिंग हबो आ अधिक कोवैलेंट कैरेक्टर देखिबो. तेनो एनायन रो न्यूक्लियस
रखिबा दरकार। Next, I will discuss some points related to the periodic tables. The polarizability of anion by a given cation decreases on moving from left to right in a period due to increase in the atomic size and charge. Next point, the polarizability of anion by a given cation increases on moving down a group due to increase in anionic size. The polarizing power of cation decreases on going down in a group due to increase in the cationic size. Next point, the polarizing power of cation increases on moving from left to right along a period due to increase of charge on cation. Remember another important point. More is the covalent character, less is the melting point, and less is the solubility of that compound in water. Again remember another important point, covalent character of ionic compound direct proportional to the polarizability of anion and also direct proportional to the polarizing power of cation. This is all about the covalent character of an ionic bond. Next I will discuss about the hydrogen bond. Suppose आमे गोटे substance नवा से substance रे अनेक गुड़िए molecule अछि. Suppose आमे hydrogen fluoride नवा. Suppose एठारे अनेक गुड़िए हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल अछंती. सपोज आमे दीटा मॉलिक्यूल कथा भाबिबा. देखो पिले एबि संपूर्ण पाठ पढले जे कोवैलेंट बॉन्ड रे आयनिक कैरेक्टर देखौछ. ए जो कोवैलेंट बॉन्ड टी होची पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. तेनो एठी तमरा डेल प्लस हबो एठी तमरा डेल माइनस हबो. सबले आउट मॉलिक्यूल मध्ये एठारे हाइड्रोजन जो अछि तापरे डेल प्लस हबो आबरे डेल माइनस हबो. ए दीटा मॉलिक्यूल जेते पिले पाखा पाखी रहिबे कोन हबो पिले. देखो पिले एठे डेल माइनस रहला एठे डेल प्लस रहला एठे नेगेटिव चार्ज रहला एठे पॉजिटिव चार्ज रहला. तेनु आंको भितरे पिले गोटे अट्रैक्शन क्रिएट हबो. ए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने पिले वेरी क्विक और सच टाइप ऑफ attraction is considered as hydrogen bond. आको हम कोन कहले हाइड्रोजन बॉन्ड बोली कहबा. तेनो हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिफाइंड एज the weak electrostatic force of attraction between the fractional positive charge hydrogen atom of a molecule with the fractional negatively charged highly electronegative atom like fluorine, oxygen, nitrogen, etc. in the same molecule or different molecule. पिले मने रखा गोटे पॉइंट. एठारे गोटे आसान रूपक नेगेटिव चार्ज ले ही एठार तमरा हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हे परिबो. तेनु पिले आमे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को ही सिलेक्ट करता. ता माने हाइड्रोजन बॉन्ड तयारी हेबा पहिले फ्लोरीन किबा ऑक्सीजन किबा नाइट्रोजन रहबा दरकार. अनदर केस रे अन्य मॉलिक्यूल रे तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन रहबा दरकार. हाइड्रोजन बॉन्ड कहबा अर्थ हाइड्रोजन नित्यांत जरूरी. तार सहित ए तीनोटी एलिमेंट रहिले ही हाइड्रोजन बॉन्ड हे परिबो. नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड आर टू टाइप्स. वन इज intermolecular hydrogen bond, intermolecular hydrogen bond. Second is intramolecular hydrogen bond.
इंटरमॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहवा अर्थ द हाइड्रोजन बॉन्ड occurring in between two or more molecules of the same compound is called intermolecular hydrogen bond. Suppose take another example. This is an organic compound. The name of this organic compound is said to be orthonitrophenol. एठारे पिले देख हाइड्रोजन अछि ना नहीं हाइड्रोजन अछि तो एठारे डेल प्लस क्रिएट हो ना नहीं क्रिएट हो एठारे ऑक्सीजन अछि पिले मध्य एठी तमरा डेल माइनस क्रिएट हो देखो पिले प्लस को माइनस आ जलेला पाखा बेगी तेनो गोटे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो ना नहीं हबो आ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो सेटा होछि वीक आ ताको हमें हाइड्रोजन बॉन्ड बोली कहता हाइड्रोजन बॉन्ड को पिले डॉटेड लाइन द्वारा इंडिकेट करा जाए देखो पिले एठारे भी हाइड्रोजन बॉन्ड तयारी हिची एठारे भी हाइड्रोजन बॉन्ड तयारी हिची किंतु एठारे जो हाइड्रोजन बॉन्ड तयारी हिची दुईटी मॉलिक्यूल रा आवश्यक पड़िला गोटे मॉलिक्यूल रा फ्लोरीन को आ गोटे मॉलिक्यूल रा हाइड्रोजन सहित तार हाइड्रोजन बॉन्ड करिया पड़िला किंतु एठारे पिले कोन हला गोटिए मॉलिक्यूल ले थिबा हाइड्रोजन एटम आ सेही मॉलिक्यूल ले थिबा ऑक्सीजन एटम मध्ये हाइड्रोजन बॉन्ड तयारी हला ए टाइप रो पिले हाइड्रोजन बॉन्ड को हमें इंटरमॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहथाओ किंतु ए टाइप रो हाइड्रोजन बॉन्ड को हमें कोन कहथाओ इंट्रामॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहथाओ इंट्रामॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहले कोन बुझिबा द हाइड्रोजन बॉन्डिंग occurring between atoms within the molecule is called intramolecular hydrogen bonding. सपोज पिले हमें आ गोटे एग्जांपल नबा आ तुमको क्वेश्चन पचरा हो एटा इंटरमॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड ना इंट्रामॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड देखिबा गोटे एग्जांपल नबा वाटर कहला पिले देखो पिले एटी गोटे हाइड्रोजन बॉन्ड अछि ये डेल प्लस हबो ये डेल माइनस हबो तो एठा जो हाइड्रोजन बॉन्ड तयारी हिची सेटा को टाइप रो हाइड्रोजन बॉन्ड tell me whether it is intermolecular hydrogen bond or intramolecular hydrogen bond एठारे जो हाइड्रोजन बॉन्ड तयारी हिची बोले दीटा मॉलिक्यूल रा आवश्यक पड़िला ये गोटे मॉलिक्यूल या गोटे मॉलिक्यूल नो डाउट सेम कंपाउंड होई पारे किंतु ए मॉलिक्यूल रा हाइड्रोजन को ए मॉलिक्यूल रा ऑक्सीजन मध्ये रे द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड तयारी होला तेणु एटा का हम कोन भाबिले इंटरमॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोली कहला सपोज टेक अनदर एग्जांपल look at that here a hydrogen bond will be formed this is your del minus this is your del plus the name of this organic compound is your orthohydroxy benzaldehyde. Tell me, this hydrogen bond is which type? एटे जो हाइड्रोजन बॉन्ड दिए हैला पिले गोटी मॉलिक्यूल रो एटम मानक भितर हैला तेणु एटा को हम कोन कहबा इंट्रामॉलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फर्स्ट पॉइंट polar covalent molecule must contain hydrogen bond first condition होजी बिले molecule टा polar covalent bond हेतिबा दरकार आ हाइड्रोजन एटम हेतिबा दरकार पिले यदि polar covalent bond न हबो ताले del plus del minus केमति तयारी हो covalent bond two types गोटे ला polar covalent bond आउडे ला non polar covalent bond फॉर एग्जांपल हमें नबा H बॉन्ड H एठारे एकले कोवैलेंट बॉन्ड अछि किंतु ए कोवैलेंट बॉन्ड टी नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड तेनो एठारे ना डेल प्लस हबो ना डेल माइनस क्रिएट हबो किंतु हमें यदि H बॉन्ड F नबा एठारे जो कोवैलेंट बॉन्ड अछि से होची पोलर कोवैलेंट बॉन्ड आ ऑब्वियसली एठे डेल प्लस डेल माइनस हबो ए टाइप रो बॉन्ड गुडा के तो जनरली पिले 100% कोवैलेंट कैरेक्टर देखांती किसी तो आयोनिक कैरेक्टर देखले ही तमरो
तो एडे डेल माइनस कि एडे डेल प्लस क्रिएट हो जा फल तमर हाइड्रोजन बॉन्ड तैयारी हो परिबो सेकंड कंडीशन हाइड्रोजन एटम मस्ट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन बॉन्ड तैयारी करिया गले खाली हाइड्रोजन नै गले हेबनी बोले किबा हाइड्रोजन को नै कि कोनोसी ले एटम सहित कोवेलेंट बॉन्ड कले हम नै हाइड्रोजन एटम थिबो हाइड्रोजन एटम का सहित करिवो ना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मानको सतिरे हबो फॉर एग्जांपल फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एमानकर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थाय बोले थर्ड कंडीशन एटॉमिक साइज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉलर obviously साइज भी स्मॉलर न हो ताहले तमरो डेल माइनस रो क्रिएट हवा जो पॉसिबिलिटी टा कमी जियो बोले तो थर्ड कंडीशन कोन कहूची एटॉमिक साइज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉलर फोर्थ कंडीशन ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और चार्ज सेपरेशन स्ट्रॉन्गर इज द हाइड्रोजन बॉन्ड सपोज बिले आमे हाइड्रोजन बॉन्ड रो स्ट्रेंथ कथा कहबा एटे बिले हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन को हाइड्रोजन भीतर आइछि एटे बिले हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन को ऑक्सीजन भीतर आइछि आमे जानि जे बिले फ्लोरीन रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन थारो अधिक बिले तेणु बिले एटे फ्लोरीन और हाइड्रोजन भीतर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अधिक रहइबो एज कंपेयर्ड टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन so the hydrogen bond in this case is stronger than this type of hydrogen bond कम भाई मिले इथे बेसी डेल माइनस होबो एटे बेसी डेल प्लस होबो as compared to this del plus and this del minus next I will discuss about the characteristics of hydrogen bonded molecule the hydrogen bonded molecule having highly electronegative atom with a small size obviously bile hydrogen bonded molecule heitiba artha seta hydrogen atom thiba आ highly electronegative atom sure thiba जो भी highly electronegative atom thiba तार obviously small size हो जदि नथिबो ताले से कंडीशन मान नथिबो आ सेटा केबेले भी हाइड्रोजन बॉन्ड नथिबो तेनो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल रे सबु बेले हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थिबो आ से एटम रो साइज स्मॉल ही थिबो सेकंड पॉइंट द हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल लाइक HF वाटर अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेट्रा हैव abnormally high boiling point and melting point पिले हमें सपोज आउटे एग्जांपल नवा H bond I एठारे कोन पिले हाइड्रोजन बॉन्ड तयारी ही परिबो कि नाही हेई परिबो नाही तेनु एठारे जो HI मॉलिक्यूल गुडाक थिबे से गुडाक पिले लेस टाइटली बाइंडिंग विथ ईच अदर हेइथिबे आमे फॉर एग्जांपल पिले HF कथा देखिबा एठारे जो मॉलिक्यूल गुडाक पिले टाइटली बाइंडिंग हेइथिबे कारण एठारे पिले मॉलिक्यूल भितरे हाइड्रोजन बॉन्ड रहउची एठारे मॉलिक्यूल भितरे पिले हाइड्रोजन बॉन्ड रहउ नाही तेनु HF केस रे पिले मॉलिक्यूल गुडाक टाइटली बाइंडिंग हेइथिबे as compared to the HI molecule तेनो obviously बिले एठारे किछि abnormal property देखबो आमे जदि देखिबा H bond F को H bond Cl H bond Br H bond I H bond F केस रे बिले हाइड्रोजन बॉन्ड तयारी ही परिबो किंतु अन्य केस रे बिले हाइड्रोजन बॉन्ड तयारी ही परिबो नाही कारण एमाने कोनोसी रूपे हाइड्रोजन बॉन्ड तयारी करिवार कंडीशन मानु नाहंती ए जो चारोटी मॉलिक्यूल बिले हाइड्राइड ऑफ हैलोजेन एलिमेंट सेमानकर गोटे निर्दिष्ट बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट रहबा दरकार थिला किंतु H बॉन्ड F केस रे गोटे एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी शो करछि जोटा कि हाइड्रोजन बॉन्ड तयारी हेबार पॉसिबिलिटी रहउची तेनु आर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एमानकर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अपेक्षा टिके abnormal रहइबो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन HF मॉलिक्यूल पिले रिमेंबर क्लोरीन होची पिले हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन किंतु क्लोरीन द्वारा पिले हाइड्रोजन बॉन्ड तयारी हेई परिबो नाही
कारण बिले आर साइज रो प्रॉब्लम क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम हेले मध्य क्लोरीन रो साइज पिले अधिक थिबा जोगो क्लोरीन केस रे पिले हाइड्रोजन बॉन्ड तयारी हे परिबो नाही तेणु इन केस ऑफ H bond Cl molecule the possibility of hydrogen bond is less जदियो किछ हाइड्रोजन बॉन्ड हबो HCl molecule मानक मध्य रे ताको हमें नेग्लेक्टेड ही करबा कारण से हाइड्रोजन बॉन्ड टी वेरी वीक मन रखबिले एठारे क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेबा सत्य मध्य तार साइज अधिक हेबा जोगु एठारे हमें हाइड्रोजन बॉन्ड तयारी करि परिबा नाही these are the some points related to the hydrogen bond next I will discuss how can you calculate the lone pair and bond pair lone pair is shortly represented as LP bond pair is shortly represented as BP तमे सब 8th किबा 9th बा 10th क्लास रे लुईस स्ट्रक्चर ड्रा करियार सिखिथिबो फॉर एग्जांपल हमें क्लोरीन मॉलिक्यूल रो लुईस स्ट्रक्चर ड्रा करिया जनकर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को डॉट द्वारा इंडिकेट करा जाए आउ जनकर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को क्रॉस द्वारा इंडिकेट करा जाए एठारे क्लोरीन रो जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन अछि ताको हमें डॉट द्वारा इंडिकेट करले एठारे क्लोरीन रो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को हमें क्रॉस द्वारा इंडिकेट करले क्लोरीन रो वैलेंसी सेल रे 7 इलेक्ट्रॉन अछि ए क्लोरीन रो मध्य वैलेंस सेल रे 7 इलेक्ट्रॉन अछि तार 7 इलेक्ट्रॉन को हमें एमती रिप्रेजेंट करले आर 7 इलेक्ट्रॉन को हमें एमती क्रॉस द्वारा रिप्रेजेंट करले दिस क्लोरीन और दिस क्लोरीन मध्य रे सिंगल बॉन्ड अछि आ गोटे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हेडी देखो बिले शो कराय अछि ये होज तार सिंगल बॉन्ड बुझा पड़छि ना बुझा पड़ने एक्चुअली एठारे बिले केतोटी इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग करी सिंगल बॉन्ड होई जनी गोटी इलेक्ट्रॉन पेयर ता माने ए जो दुईटी इलेक्ट्रॉन ही एठारे बॉन्ड तयारी करिवारे सहाय्य करिथांती मने रखो बिले बॉन्ड पेयर काउ करबा द इलेक्ट्रॉन पेयर अर्थ दुईटी इलेक्ट्रॉन पेयर में भी बिले लोन पेयर ही पारे में भी बिले बॉन्ड पेयर ही पारे द इलेक्ट्रॉन पेयर which are involved in the bond is called bond pair the electron pair which are not involved in the bond is called lone pair the lone pair is also called non-bonding pair it is also called unshared electron pair on the other hand bond pair is also called shared electron pair now how many lone pair and bond pair present in Cl2 molecule then what will be your answer look at that एठारे गोटी इलेक्ट्रॉन पेयर सिंगल बॉन्ड तयार करबा पई पार्टिसिपेट करछंती तेनो बॉन्ड पेयर एठारे 1 होबो बोले लोन पेयर केतरा अछि बोले देखो बोले 1 2 3 4 5 6 ए जो 6टा इलेक्ट्रॉन पेयर विषय कोहाला ए माने बॉन्ड तयार करिया रे पार्टिसिपेट करछंती कि ना तेनो एको हमें लोन पेयर कहबा the electron pair which participate in the bond is called bond pair the electron pair which do not participate in the bond is called lone pair similarly think about the nitrogen molecule this is the Lewis structure of nitrogen molecule एठारे बिले तीनोटी इलेक्ट्रॉन पेयर अछि जोटा कि बॉन्ड पेयर रूपे में कंसीडर करबा कारण ए तीनोटी इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड तयारी करिवारे हेल्प करछन आउ जो दुईटी इलेक्ट्रॉन पेयर रहिला आकु हमें लोन पेयर कहबा कारण ए दुईटी इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड तयारी करिवारे हेल्प करिनाहंती तेनो
anything about the water molecule. This is the Lewis structure of water molecule. Oxygen having 6 electrons in the valence shell. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hydrogen having 1 electron in the valence shell. This is your 1 electron present in the valence shell of hydrogen. This is another electron present in the valence shell of another hydrogen atom. This electron pair is used for the bond formation between oxygen and hydrogen, like this. This electron pair also used for the bond formation between oxygen and hydrogen, and these two electron pair are not used for the bond formation. So these two electron pair are called lone pair. These two electron pair are called bond pair. So how many lone pair and bond pair present in water molecule? Your answer is your 2 lone pair, 2 bond pair. This is all about the lone pair and bond pair. Thank you. Have a nice day.